laksa curry soup. Very simple, very easy, a very authentic recipe. चले सीखते हैं इसे बनाना विथ वेरी सिंपल इंग्रेडिएंट्स। तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए टू मेक दिस रेसिपी। Hello friends, welcome to my channel of more and more food, flavor, color and celebration. Assalamu alaikum. I hope you all are doing super. आज की जो रेसिपी है बड़ी लाजवाब है, बड़ी एरोमेटिक है, खुशबूदार है, यमी है। और आज जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं वेज लाक्सा सूप करी। बड़ी बेहतरीन रेसिपी, मन भर जाता है एंड क्या बोलते हैं, आपकी रूह खुश हो जाती है। वेरी सोल सैटिस्फाइंग डिश, इट इज सो डिलिशियस। तो चलो देखते हैं इसे कैसे बनाना है, और वो भी हमारे इंडियन इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इसको बनाने के लिए चाहिए लेमन ग्रास। ये आराम से देख लें। आई गॉट दिस फ्रॉम बैंगलोर। यहाँ का चेन्नई में कहाँ मिलता है आई डोंट नो, बट इसके बहुत फ़ायदे हैं। और अमेज़ॉन पे मुझे कुछ ड्राई लेमन ग्रास के आइटम्स मिले हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी। सूखा लेमन ग्रास आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा ये लेमन ग्रास देखो सूख गया है। ये मैं इसे काफ़ी वक्त पहले ले आई थी। तो मैंने क्या किया है, इसे मैंने चॉप कर लिया है। तो ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा सूखा लेमन ग्रास। चॉप करके हल्का सा मैंने वार्म वाटर डाल दिया इसमें। अभी मैं इसे क्रश कर लूंगी। तो मैं इसे साइड में रखती हूँ। ओके, फिर हमें चाहिए ये वेज नूडल्स है। आप कोई भी नूडल्स ले सकते हैं, आप मैगी भी ले सकते हैं, एनी नूडल्स, वेज हाक्का नूडल्स, कोई भी तरह का नूडल्स आप ले सकते हैं। काफ़ी जगह फ्रेश लेमन ग्रास नहीं मिलता है, इसके लिए मैं ये रेसिपी ड्राई लेमन ग्रास से बना रही हूँ, सो दैट यू नो हाउ टू मेक इट विथ ड्राई लेमन ग्रास। विथ फ्रेश लेमन ग्रास इट्स इजी टू मेक द मसाला। इसका जो धागा जो मुंह में आता है ना, वो मुझे पसंद नहीं आता। इसके लिए मैं ग्राइंड करके छान लूँगी इसे। और हमें चाहिए कुछ इस तरह के वेजिटेबल्स। ये देख रहे हैं आप, ये सारी वेजिटेबल्स को मैंने गर्म पानी में एक भाप दे दी अच्छी से 2 to 3 मिनट्स ब्लांच कर लिया है पानी में। ओके, और मैंने उसका पानी इस तरह से साइड में रखा है। इसी पानी में मैंने 5 से 6 कश्मीरी चिली डाली है और कुछ 7 से 8 काजू भिगा के छोड़ दिए मैंने। और ये पानी हम फेंकेंगे नहीं, हम ये पानी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद चाहिए हमें मशरूम्स, आप देख सकते हो मशरूम्स। हमें चाहिए मसाले के लिए, हमें चाहिए एक छोटी प्याज। अगर आपके पास सांबार अनियंस है तो 8 से 10 वो ले ले। एक हरी मिर्च मैंने डाली है इसमें। और मुझे इतने सारे लहसुन चाहिए, तो मैंने इसे वॉश कर लिया और मैं तो छिलके के साथ ही डालती हूँ। मशरूम, तो ये गार्लिक है, ओके, और ये अदरक है। और अगर आपको गैलांगल मिलता है शॉप में कहीं गैलांगल, तो आप गैलांगल डालें। मैंने इतनी सारी अदरक नहीं, मैंने आधी अदरक डालनी है खाली। हाफ जिंजर आई विल बी पुटिंग। आप जब गैलांगल भी लेंगे तो मेरे ख्याल से 2 से 3 छोटे टुकड़े डालिए, बिकॉज वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं ये डालूंगी। ठीक है, इसके बाद हमें इसमें डालना है ये जो सूखी लाल मिर्च है जो मैंने भिगा के रखी है, और वो कैशू नट्स, ये सब हम डाल देंगे इसके अंदर। और अगर आपको ताज़ी क्या बोलते हैं फ्रेश आपको टर्मरिक मिलती है, हल्दी, फ्रेश हल्दी मिलती है, तो आप वो भी डाल सकते हैं।
मेरे पास फ्रेश नहीं है तो मैं डाल रही हूँ इसमें आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। और मैं डाल रही हूँ एक आधी चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर, मैं डाल रही हूँ एक चम्मच धनिया पाउडर, और हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच कुटा जीरा। ओके, तो ये हमने सारी चीज़ें, मसाले हमने सारे इसमें डाल दिए हैं। अब इसी पानी से मैं इसे पीसूंगी। थोड़ा पानी डालूंगी और थोड़ा और पानी मैं इसमें डालूंगी। तो पहले मैं इसे पीस लेती हूँ कि मुझे इसको स्ट्रेन भी करना है। सो आई सी यू, ये सब पीस के मैं आपको मिलती हूँ। ये देख लीजिए एक बार, ठीक है। Alright friends, we'll grind this now, but before that I wanted to show you that I have grinded the lemongrass. So the dry lemongrass will look like this, very thready, which I personally don't like it. So I'm going to sieve this. When you're going to use dry lemongrass, soak it in warm water at least for 30 minutes. Then grind it. Follow the tips and tricks. Dry lemongrass, like fresh lemongrass, will give you all the taste and flavor. I have used it many times. बस अच्छा निचोड़ के निकाल दो. If the lemongrass is fresh, then it will become like a paste. But if it dries up, then this is how it is. Please follow this for good results. Okay. अभी बस ये भूसे जैसा हो गया है. It's like this now. Like a hay. It's of no use. I'm again rinsing that with water to extract all that flavor and taste of lemongrass. One more time, if you want, you can wash it in this with that water. Ensure that all the goodness of the lemongrass Is squeezed out completely. so aromatic. I'm discarding. Now I'm adding this water here little, and rest I will add it to the gravy. I'll grind this and get back to you. Let's check the masalas, friend. Oh. क्या खुशबू है, वाह. Beautiful. So aromatic. So our masala is ready. Now we need oil. We'll gunofy this in the oil very nicely. And there are few more things we need. We need salt. We need some juice of one lemon. And we need some sugar to balance out all the flavor and the taste. And we have all our vegetables ready over here. Everything is ready. So let's start with the recipe. We need hot water. Now the coconut milk that I'm using is, you can make coconut milk out of fresh coconut also, it's up to you. You know, I'm lazy, I like shortcuts, and when you have got something so nice, why struggle? So I'm using homemade ka coconut milk. Okay, and this is 200 ml. How much is 200 ml? Here it's exactly 1 cup. Now I need thick coconut milk and I need thin coconut milk. So that much only water
I'll be pouring in this and I'll be taking. We need 400 ml to 600 ml coconut milk for the recipe. I have added to the pan 2 tablespoons chopped garlic, and now we'll add oil. 1/4 cup oil I've added. We need to fry this well. We'll add the paste. Oh my god, what a pleasing color that is. So pleasing, and it is such a soul refining dish. What should I tell you? Only when you make it you will know. Oh, what should I tell you? Oof. What an amazing aroma. The aroma is too good. I'll add lemon juice, everything. We need to add salt now. So salt, I'm going to add 1 teaspoon salt. I've added. You can add jaggery also to this. You can add sugar. We have got our lemongrass water also to add. Some is already gone in this. I'm going to add some more oil. So, 1/4 and 2 tablespoon oil I have added because this paste needs good oil. Sugar, I'm adding 1 teaspoon right now. So follow all this correctly because to make this recipe you need to have the good balance of salt, sugar and khattai, lemon juice. Okay. You can add tamarind also if you like, not a problem. Wow, look at that color. You can add to this 2 teaspoon tamarind juice or juice of half lemon. Because this particular recipe is khatta, meetha, tikha, salty. All this combination is there in this recipe. So basically a Malaysian dish. Even Indonesian people make it. Even in Singapore, Singaporeans also make it in their own way. Everybody has their way of making it. Don't let the goodness burn. Oh. Look at that. I need to add one very special masala in this. But पहले हम भुनेंगे बहुत अच्छी तरह से. I'll quickly get that masala. And that masala is the curry powder. Without this, this recipe is incomplete. So I'm adding, no, I'll add half teaspoon because ये super spicy होती है. आपको spice अच्छा लगता है तो आप ज़रूर डालें 1 teaspoon. I'm adding only half teaspoon right now. I'll taste and see. I think I'll add one more half teaspoon. I'm adding another half teaspoon. Spice and all I'll see later. Now I'm going to add to this. No, not the coconut milk. I'm not adding coconut milk so soon. And I'm not adding chilies also so soon. And I'm adding our mushrooms. Because mushrooms need to cook and they will leave water. So we will add mushroom.
We have already blanched our vegetables, so we will cook the mushroom first in this. I'll just taste the masala. Amazing spice. I'll need to add 1 more teaspoon sugar, and we need to add soy sauce. Say half teaspoon soy. Slow down the gas or all your goodness will burn. Half teaspoon soy. Now we'll add our blanched vegetables, which I have diced them like this. I've taken here green and yellow zucchini, baby corn, few beans, and some carrot. Now I have the goodness of the remaining water here, lemongrass water, and also the water in which we had blanched the vegetables. Nothing should go waste, all the nutrients are there in it. Gas fast kar do, and have it with rice, have it with noodles, have it the way you like. Watch all my recipes, friends. Watch my leftover recipes. They are very delicious and very yum. My leftover biscuit cake, do watch that. Leftover tatte idli, corn upma, do watch that. I'm directly not going to add coconut milk to this as of now. Okay, first I'm going to add this water here because I want my vegetables to boil a bit. Okay, spring onions. Boil it for 2 to 3 minutes, then add the thin coconut milk. You will enjoy them once you start making it. Give it a boil of 2 to 3 minutes. Then we'll add the thin coconut milk. Once we add the other coconut milk, slow down the gas. We will know the exact taste. Right now I'm adding only 200 milliliter. Just this much bubble is more than enough. Everything is cooked. Oops. Everything is cooked. So I'm adding 200 milliliter coconut milk. Adding another 200 ml coconut milk directly to the curry. So in total I've used 400 milliliter of coconut milk. I'll just give it one boil. That's it. And the recipe is done. I'll quickly show you how to plate it. See you then in another 5 to 10 minutes. One very important ingredient got left out, friends, and that is the delicious tofu. So this is done almost. I'm switching off the gas, and in this heat the tofu will cook well. Let's go ahead and assemble the laksa soup. All the condiments are right here. We have the noodles here, and we have our delicious condiments over here.
for the laksa soup. You can put cabbage also if you like. If you've got bean sprout, you can use bean sprout also. I'm using whatever is there with me: spring onions, coriander, leek, some chilies, and lemon. Let's see how we assemble this. And we need our delicious laksa curry. Without that, we won't be able to assemble. First, we need to pour very, very delicious laksa soup. With generous quantity. Some coriander. Okay. Some onions and of noodles. Here, these yummy color. Friends, here is my delicious veg laksa curry soup. Please do make this recipe. If you have liked my recipe, please give a like, share, and don't forget to subscribe my channel, friends. If you subscribe my channel, you will get timely notification of all the authentic recipes that I upload. So don't forget to subscribe the channel, friends. I will see you soon with another recipe. Till then, you take very good care of yourself. Be at home. Be safe. Take care then. Bye bye.